8085 के आज हम वो देखने वाले, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपके प्रैक्टिकल से आपको वो भी इजी होगा, एंड सेकंड आपको एग्जाम में भी अराउंड 20 मार्क का क्वेश्चन तो इससे ही आएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इंस्ट्रक्शन सेट देखते हैं। सो वाइल लेक्चर के दौरान ही इफ पॉसिबल आप नोट्स बनाना भी चालू कीजिए, और यस आई विल शेयर, मैं ये शेयर कर दूंगा आपको लास्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन देखते हैं। डेटा ट्रांसफर instructions, okay. See, first one is what? Move instruction. Move instruction. Okay, first of all data transfer होता क्या है? Data transfer means what? कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर करना है तो सभी हमें क्या यूज करना है? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो इसमें फर्स्ट क्या आता है? मूव। देखो मूव में 4 पार्ट है। See, M stands for memory and R stands for register, okay? See, इसका मतलब क्या है कि we have to move content from memory to memory. This means from R to MC. ये ऐसा होता है। तो अगर आपको डेटा मूव करना है कहाँ से? रजिस्टर से मेमोरी में, तो हमें लिखना पड़ेगा मूव M कॉमा R। अगर हमें मेमोरी से रजिस्टर में मूव करना है तो मूव R कॉमा M। से इसमें से ना ये दिस इज इनवैलिड, दिस इज इनवैलिड मींस हम ये यूज नहीं कर पाएंगे। बाकी दिस ऑल थ्री आर वैलिड वन, वी कैन यूज ऑल दिस थ्री, ओके। नाउ हम अभी एक एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझते हैं। सी फर्स्ट मूव M कॉमा R, ठीक है। देखिए ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है? देखिए दिस इज योर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। दिस इज योर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, and number of byte is what? 1. Number of byte is what? 1. एंड देखो इसका एग्जाम कैसा लिखना है? लाइक बिफोर एग्जीक्यूशन एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन, बिफोर एंड आफ्टर। Example will be like something in this way. Move see this is your memory location, okay? ये आपका क्या है? मेमोरी लोकेशन है, एंड दिस इज योर रजिस्टर। ये इंस्ट्रक्शन से होगा क्या कि योर कंटेंट, see with the help of this instruction the content of B will move into memory location 804058, okay, and B content and content of B will be remain as it is, and content of B will remain as it is। मतलब कंटेंट ऑफ बी चेंज नहीं होने वाला है, खाली जो 508 में कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा विद कंटेंट ऑफ बी, ओके। सी अभी तो ये 1 बाइट, इसको हमने 1 बाइट क्यों बोला? सी देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज हेक्स कोड। अगर आपने कॉलेजेस में प्रैक्टिकल क्या होगा तो आपको देखो, जब आप प्रैक्टिकल करते, जब हम कोड लिखते हैं
तो हमें एक चार्ट मिलता है, एंड वो चार्ट में देखो, अगर हम ये चार्ट देखेंगे ना, इट्स सी दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज हेक्स कोड चार्ट फॉर 8085। आई होप सभी को ये पता हो, हेक्स कोड चार्ट फॉर 8085। So this is something which we have to use while doing the practical examination. Okay. So अगर हम इसमें नोटिस करें ना, तो देखो हर इंस्ट्रक्शन का ना हमें ना एक हेक्स कोड मिलता है, मतलब हमें एक नंबर मिलता है हर इंस्ट्रक्शन का। ओके, तो वो हमें नंबर टाइप करना रहता है। आई थिंक सो, अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको पता रहेगा कि हमें वो नंबर टाइप करना रहता है। तो देखो वैसा ही जब हम ये इंस्ट्रक्शन लिखते हैं मूव एम कॉमा आर, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैंने ये लिखा मूव 5050 बी, इसको हम ऐसा भी लिखते हैं। हाउ वी कैन राइट दिस वन इज मूव एम कॉमा बी। सी फॉर दिस इंस्ट्रक्शन ना देयर इज वन यूनिक नंबर, लेट अज्यूम दैट यूनिक नंबर इज 56, and this 56 is what, one byte. This 56 is what, one byte, therefore this instruction is of one byte. Okay. So see in exam what we have to write, अगर एग्जाम में आपको आता है, यू हैव टू एक्सप्लेन द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट व्हाट इज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, देन हमें इसमें से कोई भी 5 इंस्ट्रक्शन हमें उनको एक्सप्लेन करना रहता है। तो अगर हम ये इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर रहे मूव आर कॉमा एम, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, एड्रेसिंग मोड, then the byte, then one example, and before execution and after execution. So before execution and after execution हमें क्या लिखना है, इसी की देखिए यहाँ पर, like before execution let assume the register B is having 48 and the memory location 5048 is having 22. So after execution will what, the content will be what, see you have to draw this diagram in this way. This is see after execution, see at 5048 48 will come, and at B 48 will remain as it is, no change in the B, because we are doing, we are moving content of B into memory location. Okay, I hope this is clear to everyone. इसमें कुछ डाउट है ये इंस्ट्रक्शन में? No sir. Okay, fine. अभी देखिए सेम वैसे ही हमें क्या लिखना है, सेम वी हैव मूव, जैसे कि अभी हमने क्या देखा फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी, सेम वी हैव फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी, फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी। देखिए ये भी हमें ऐसा ही लिखना है, दिस एड्रेसिंग मोड इज आल्सो व्हाट, इनडायरेक्ट, दिस एड्रेसिंग मोड इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। देन नंबर ऑफ बाइट्स क्या होगा इसमें भी, से नंबर ऑफ बाइट्स इसमें कितने होंगे हमारे, 1 होंगे, कितने बाइट, 1 बाइट। देखिए इसका एग्जांपल हम कैसा लिख पाएंगे, एग्जांपल इज व्हाट, एनीथिंग लाइक मूव लाइक सी कॉमा एम। तो अगर आप हेक्स कोड, अगर आप वो चार्ट में देखोगे ना, तो आपको इसका एक नंबर मिल जाएगा आपको, लेट अज्यूम वो नंबर 56 अज्यूम कीजिए। तो देखिए ये कितना बाइट है, ये 1 बाइट ही हुआ ना, तो इसलिए इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का है। And then same before execution and after execution we have to write the explanation, same way we have to write explanation as we have done earlier. So देखिए आपको कैसा करना रहता है, देखिए इसे हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्यों कहते हैं, इसे हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्यों कहते हैं, वो थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए इसमें हमें ना, हम डायरेक्टली एड्रेस दे देते हैं ना। देखिए इसमें कैसा होता है, अगर ये हम इंस्ट्रक्शन देखें मूव सी कॉमा एम, देखिए इसमें इसमें हमने डायरेक्टली एड्रेस नहीं दिया, इसमें हमने डायरेक्टली एड्रेस नहीं दिया। ये एम जो होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि एच एंड एल में,
HL में जो वैल्यू रहता है ना, वहां पर हमारा मेमोरी लोकेशन पॉइंट करेगा, समझ रहे हो? जैसे कि मैंने ये लिखा, लेकिन इसका इंटरनल मीनिंग क्या होता है कि जो भी वैल्यू HL में रहेगा वहां पर मेरा मेमोरी लोकेशन पॉइंट करेगा। सी मान लो, अज्यूम करो H में 50 एंड L में 40 है, तो मेरा मेमोरी लोकेशन क्या है? 5040। समझे? तो मैं ये डायरेक्टली नहीं लिखता हूँ ना यहाँ पर। सी अज्यूम, देखिए अगर मैं डायरेक्टली अगर ऐसा लिखता, मैं मूव C, 5040, देन दिस इज योर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि मैं एड्रेस डायरेक्टली उन्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन ये केस में ये नहीं हो रहा। मैं ये केस में क्या लिख रहा हूँ? मूव C, M। एंड इंटरनली इसका मीनिंग क्या होता है? इंटरनली, सी इंटरनल मीनिंग ऑफ दिस इज व्हाट? मूव C, HL, मूव C, HL, which further we can write it as move जो भी H में एंड L में वैल्यू रहेगा वो। देखो ये केस में हम डायरेक्टली एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर रहे, इसलिए हम इसे कहते हैं इनडायरेक्ट। इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है? ठीक है, आपको एग्जाम में ना अगर हम लोग पूछते तो आपको ऐसा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिफोर एग्जीक्यूशन एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन। सी लाइक वी हैव टू टेक समथिंग इन HC0 एंड इन L31। तो देखिए आपका मेमोरी लोकेशन क्या हो गया? सी मेमोरी लोकेशन क्या होता है? HL will point to memory location, will point to memory location। इसका मतलब क्या है? जो भी आपका HL में वैल्यू रहेगा ना, अगर मैं HL कंबाइन लिखूं तो दिस इज C031, तो दिस इज योर मेमोरी लोकेशन, दिस इज योर मेमोरी लोकेशन। तो आपको एग्जाम में दिए कैसा लिखना पड़ेगा? H इक्वल टू, दिस यू वोंट हैव टू राइट, ओके। H equal to serial, L equal to 31, and let assume register C equal to 41, equal to 41। एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन हमने इंस्ट्रक्शन क्या लिखा? मूव C, M, मूव C, M। तो देखिए अभी हमारा M क्या है? आर M इज व्हाट? C031, बिकॉज HL में क्या है हमारा? C031, तो अपना M क्या है? C031। तो देखो आपको ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। C030, C031, C032, let be 20, 10, 20, 30, and let C is 41 ना, तो C क्या हो जाएगा हमारा नाउ? 20। C why 20? 20 क्योंकि देखो HL में क्या? C031, तो मेमोरी कहाँ पॉइंट करेगा मेरा? यहाँ पर। सी हमारा इंस्ट्रक्शन क्या है? मूव M, C ना, तो मेरा मेमोरी किधर पॉइंट करेगा? यहाँ पर। तो M में क्या है? 20, इसके लिए हम क्या करेंगे? 20 को C में मूव करेंगे। सी है, this is what example of move M, C, means from memory to register, from memory to register, okay। And next is what? Move and next is what? Move R, R is means what? Move from register to register, move from register to register। ठीक है, देखिए अभी कैन एनीवन लेट मी नो ये इसका एड्रेसिंग मोड क्या होगा? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। राइट 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 राइट, क्योंकि देखो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्यों? क्योंकि देखो अपना डेटा अवेलेबल कहां पर है? रजिस्टर में। दिस इज व्हाट? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, राइट, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अच्छा मुझे कोई बता पाएगा कितने बाइट का ये इंस्ट्रक्शन रहेगा? 1 बाइट। देखो क्यों 1 बाइट? देखिए अगर हम कोई एग्जांपल कंसीडर करें, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, देखिए मूव लाइक अज्यूम कीजिए मूव B, C और मूव A, C, एनीथिंग यू कंसीडर, एनीथिंग, से दिस ऑल आर रजिस्टर। तो अगर आप वो चार्ट में देखोगे ना, तो आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा ये इंस्ट्रक्शन के लिए, इसलिए क्या रहेगा? ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ओके। एंड इन एग्जाम आल्सो यू हैव टू राइट इन सेम वे। नाउ बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एग्जीक्यूशन एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन। सो देखिए बिफोर एग्जीक्यूशन आपको कैसा लिखना है? लाइक अज्यूम B में 40 है, C में 50 है, एंड हियर यू हैव टू टेक टू एग्जांपल। लाइक ऐसा कर लीजिए मूव लाइक C, B। तो इसमें क्या होगा? देखिए मूव C, B मींस व्हाट? हमें ऐसा उल्टा रीड करना है, मतलब हमें राइट टू लेफ्ट जाना है। वी हैव टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सी मूव C, B, मतलब C से B में मूव नहीं करना है, हमें B से C में मूव करना है। तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40, एंड B का तो 40 ही रहेगा। सबको समझा? और एल्स अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं, कैसा? इफ वी राइट मूव B, C, then in this case what will happen? B will become 50 and C will remain as it is। I hope this is clear to everyone। अगर
इसमें किसी को डाउट है ये तीनों इंस्ट्रक्शन में, देन लेट मी नो। एवरीवन एक बार सब लोग वापस देख लो। ओके हम सी वी हैव डन विद मूव इंस्ट्रक्शन। नाउ देखो मूव इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हमारा डेटा कहाँ पर स्टोर होता है। लाइक अज्यूम कीजिए, देखो मूव हमें मूव कब यूज करना है, हमें मूव इंस्ट्रक्शन यूज कब करना है। सी व्हेन वी हैव टू यूज मूव इंस्ट्रक्शन, व्हेन वी हैव टू यूज मूव इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब हमारा डेटा कहाँ पर स्टोर है पहले से ही एंड हमें वहां से डेटा हमें मूव करना है और कहाँ पर, तो सभी हमें क्या यूज करना है, मूव इंस्ट्रक्शन। ओके एंड देखिए, लेकिन अज्यूम कीजिए आपको डायरेक्टली कहाँ पर डेटा स्टोर करना है, आपको डायरेक्टली डेटा कहाँ पर स्टोर करना है। देखिए मूव का हम कैसे समझ पाएंगे, जैसे कि मान लो हमारा एक गोडाउन है एंड वी हैव अ गोडाउन एंड वी हैव अ शॉप। ओके एंड वी हैव अ शॉप। अगर आपको गोडाउन से शॉप में मूव करना है लाइक एनीथिंग गुड्स, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मूव इंस्ट्रक्शन। क्या यूज करना पड़ेगा, मूव इंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपका डेटा पहले से ही कहाँ पर अवेलेबल है, आपको डेटा खाली जस्ट मूव करना है। नो अज्यूम कीजिए आप गोडाउन में ही लाइक आपका आपका गोडाउन है, आप उसमें डेटा मूव कर रहे हो, मतलब आप न्यूली डेटा इंसर्ट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, न्यूली डेटा इंसर्ट कर रहे हो। न्यूली डेटा आप इंसर्ट, वी आर डूइंग न्यू डेटा इंसर्ट। अगर आपको डायरेक्ट डेटा सी, इफ वी वांट टू if we want to insert data directly, we want to insert data directly, then हमें यूज क्या करना है, MVI। what MVI, the full form is what, move immediate। move immediate or immediate, anything you can pronounce, move immediate। okay इसमें हमें कैसा करना है, move immediate में see, like example for this instruction is what, see MVI। see this is also, देखो इसका भी ना this also have two version। one is what you can directly move data into memory, directly move data into memory, or we can directly move data into register। so these are the two ways through which we can do it। okay so let's देखिए हम ये दोनों वर्जन देख लेते हैं। see first is what, move, let's consider register to memory, register, ठीक है, and data। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इज व्हाट, लाइक लेट MVI B, 84H। देखिए इसका मतलब क्या है कि हम डायरेक्टली रजिस्टर बी में 84H स्टोर कर रहे हैं, हम डायरेक्टली बी में 84H स्टोर कर रहे हैं। अच्छा अभी इसमें एड्रेसिंग मोड क्या आएगा, एड्रेसिंग मोड, सी एड्रेसिंग मोड विल बी व्हाट, इमीडिएट। व्हाई इमीडिएट, क्योंकि हम डायरेक्टली डेटा स्टोर कर रहे हैं ना, हम डायरेक्टली डेटा स्टोर कर रहे हैं, इसलिए इसका एड्रेसिंग मोड क्या रहेगा, इमीडिएट। और एक शॉर्टकट भी याद रखो तुम लोग, सी व्हाट इज ए शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है कि अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन में अगर आई रहेगा ना, आई, कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन में देयर इज आई, then we call it as immediate addressing mode। okay then we called it as immediate addressing mode। ठीक है, सी एग्जांपल क्या है अपना, MVI B, B, 84। तो इससे क्या होगा, 84 डायरेक्टली हम बी में मूव स्टोर करेंगे। एड्रेसिंग मोड इज इमीडिएट। नाउ नंबर ना बाइट, अब देखो कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है, वी हैव टू, हमें देखना समझना पड़ेगा। देखिए लाइक अगर आप हेक्स कोड चार्ट में देखोगे ना, तो सी फॉर दिस इंस्ट्रक्शन सी आई हैव रिटन MVI 84H। देखिए अगर हम हेक्स कोड में देखेंगे ना, हेक्स कोड का चार्ट में, तो हमें खाली इतने के लिए ना वी विल गेट अ यूनिक नंबर। लाइक assume that unique number is 64, assume it। okay so this is one byte and see this is a number na, so this is also one byte, this is also one byte, so total byte is what, 1 plus 1 2 byte। टोटल कितना बाइट हो गया, 2 बाइट।
ओके सो ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन, दिस इज 2 बाइट, this is 2 byte instruction. Now same after execution, before execution, say before execution, like assume कीजिए कि b में मेरा 40 है, then after execution क्या हो जाएगा, after execution मेरा b में कितना आ जाएगा 84h, क्योंकि हमने क्या मूव किया है, हमने 84h डायरेक्टली मूव किया. दिस इज ऑल अबाउट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. ओके सबको समझा, ये किसी को कुछ डाउट है इसमें इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में? सेम इमीडिएट का सेकंड वर्जन क्या है, लाइक यू कैन डायरेक्टली मूव डेटा इनटू मेमोरी आल्सो, you can directly move data into memory also. See, example is what, same. How we can write example? Like move MVI m comma at 84h. See, addressing mode will be what? See, addressing mode will be indirect. Why indirect? देखो हम इसमें डायरेक्टली एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ना, जैसे जैसे कि सी हियर वी हैव रिटन m means what, HL मीन्स जो भी HL में वैल्यू रहेगा वहां पर m पॉइंट करेगा, तो हम एड्रेस इनडायरेक्टली दे रहे हैं वाया HL. सी वी आर प्रोवाइडिंग एड्रेस indirectly through HM, therefore it is called as indirect addressing mode. Okay, now example is of MVI 84H, addressing mode will be indirect. Now number of bytes, see same number of byte means what. So if you see in the chart again, see for MVI you will get a unique number, for MVI you will get a unique number, so 1 byte, and see this data is 1 byte, so total is what, 2 byte instruction, total is what, 2 byte instruction. Now example of how we have to write the example, same you have to write before and after execution. See before execution and after execution. See before execution will be what, see like H में C0 है, L में 3 1, ठीक है, and let so you have to draw in this diagram. And this is C030, C031, and C032. Let it to be 10, 20, 30. See after execution, what will happen? C030, C031, C032. देखिए हमारा भी MC, what we are doing, we are moving data directly into memory. But what is the memory location? So memory location क्या होगा? What will be the memory location? So memory location will be what? The content of HL is the memory location. The content of HL is memory location. Is memory location. तो HL में क्या अपना C031, तो अपना memory location क्या? This is a memory location. Okay. So see, ये तो ऐसा ही रहेगा. 10 will be as it is, 30 will be as it is. Only see C031 में क्या आ जाएगा अपना 84. सबको समझा ये दो इंस्ट्रक्शन? गाइस अगर आप Yes. देखिए अगर आपको ये समझ जाएगा ना, देन दी जो भी अपना प्रोग्रामिंग रहेगा, कोड रहेगा, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. एंड एग्जाम में ये लास्ट में 10 मार्क का 20 मार्क का आता ही है. लास्ट अगर आप क्वेश्चन देखोगे, लाइक देयर विल बी लाइक 10 मार्क क्वेश्चन वेयर यू हैव टू राइट 2 कोड्स, एंड आप वो सब याद नहीं रख पाओगे इतने सारे कोड्स. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर. Okay, so we have done with move and MVI. Now let's learn some LXI. See LXI. See this stands for what? See देखिए इसका इतना याद रखिए. See LXI. So this is mainly used for pointing to a memory location. इतना आप याद रखिए. This is mainly used for pointing to a memory location. This is mainly used for pointing to a memory location. ठीक है, and this example हम कैसा लिखेंगे, इससे पहले हम कैसा लिखते हैं example LXI at C030. So this means what? This means in H your C0 will be there, and in L your 30 will be there, and if we combine HL then it is C030. So your M
So your M will point here. Your M will point here. This is the only use of LXI. Okay. And see, addressing mode is what? Can anyone let me know what is the addressing mode here? Immediate. See, why immediate? See, मैंने आप कहा था, देखो अगर इंस्ट्रक्शन में अगर आई रहेगा ना तो immediate. It's an immediate addressing mode. देखो number of bytes will be what? Sorry. See, number of bytes. देखिए कैसा होता है इसमें. See, LXI H C030. See, अपने को ना ओके राइट 3 बाइट का. ये क्यों 3 बाइट का? देखिए दिस इज 1 बाइट, क्योंकि आपको इसका एक यूनिक नंबर मिल ही जाएगा चार्ट से. ऐसे दिस इज 4 नंबर ना, ये कितना 4 नंबर है. देखिए मैंने क्या कहा था आपको, 2 नंबर का अपना 1 बाइट होता है. दिस इज 1 बाइट एंड ऑल्सो दिस इज 1 बाइट. टोटल कितना हो गया 3 बाइट. टोटल कितना हो गया 3 बाइट. ठीक है, 2 नंबर का 1 बाइट. अगर हम इसमें देखें, इसमें हमारे लाइक स्टार्टिंग में देखो मैंने क्या कहा था, सी 2 नंबर है 1 बाइट, लेकिन इसमें कितना नंबर है, इसमें 4 नंबर है ना, तो 2 बाइट. एंड ये इंस्ट्रक्शन 1 बाइट, तो टोटल विल बी योर 3 बाइट. ओके, दिस इज द यूज ऑफ द LXI. इतने याद रखिए कि LXI mostly we will use to point to a memory location. Now see, there are some more instructions are there in the data transfer instruction. One is what? LDA. Second is what? STA. One is LDA and second is STA. Okay, these two are, and third is what? LDA X, and fourth is what? XTA X. ठीक है. See now, ठीक है, अगर अभी हमें ये 4 रीड करना है. So this 4 instruction can come in your exam for the explanation. Like they will say you explain say in exam the question will come in this way. What is data transfer instruction? What is data transfer instructions? And explain any 5 instructions. Any 5 instruction. तो आपको इसमें कैसा करना पड़ेगा? से here you have to explain move, and move के तीनों पार्ट. This is one instruction. Second, you have to explain MVA. Then third, you have to explain was LXI. And fourth, you have to explain LDA. This was also have 2 parts. One is LDA, one is LDAX, and fifth, you have to explain STA. So one is STA and other is XTA XC. देखिए ये 5 मार्क का आएगा. अगर 5 मार्क का आता है तो आपको ये सब लिखना है along with example in each and every question. ठीक है. This is 5 mark question where you have to write everything. So now let's see what is LDA. See, LDA what stands for what? Load accumulator. Load accumulator. See, means what? Load accumulator means what? देखिए like they will give. ये कैसा होता है load accumulator? See, like first of all understand the example. See, this means what? कि ये memory location में, see ये instruction में, see in this instruction we have to give the memory location. Okay, in this instruction we have to give memory location. तो इसमें होगा क्या? See, जैसे कि डेफिनेशन ही कह रहा है, लोड एक्यूमुलेटर मीन्स जो भी वैल्यू ये मेमोरी लोकेशन में रहेगा, हमें वो कहाँ पर लोड करना है? एक्यूमुलेटर में. ओके, अच्छा कोई बता पाएगा मुझे कौन सा एड्रेसिंग मोड है? एनीवन? विच टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड दिस इज? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. राइट. डायरेक्ट क्यों? क्योंकि देखो हम डायरेक्टली यहाँ पर एड्रेस दिए ना, इसलिए कौन सा एड्रेसिंग मोड है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. ओके, नाउ नंबर ऑफ बाइट्स.
देखिए सेम नंबर ऑफ बाइट्स हम कैसा निकालते हैं, दिस इज LDA C032 ना। देखिए सो फॉर दिस यू विल गेट वन यूनिक नंबर फ्रॉम द हेक्स कोड चार्ट एंड सी ये कितना नंबर है, दिस इज वन बाइट एंड दिस इज वन बाइट, so total will become what, 3 byte. Okay, total will become 3 byte. Okay, and see now before execution and after execution, before execution and after execution. Okay, so before execution आपको कैसा लिखना है, so you have to write in this way, before execution at C030, C031, C032 and C033, that would 10, 20, 30, 40. And after execution will be what, and let A having 15. And after execution what will happen, A में क्या आ जाएगा 30, क्योंकि देखो हमने इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है LDA C032, तो जो भी C032 में कंटेंट है वो कहां पर आ जाएगा 30, एंड बाकी मेमोरी लोकेशन विल बी एज इट इज ना, तो C03, ठीक है, यहाँ पर ऐसे रहने वाला है वो। I hope this is clear to everyone. What is LDA? देखिए लेक्चर में खाली तेजस नहीं है, बाकी सब भी है, अगर अगर आपको नहीं समझ रहा तो यू कैन लाइक आस्क। सभी को समझ रहा है सब कुछ ही या सब बाउंस जा रहा है? समझा सर। Here this is we have done with LDA. Now same STA. See STA is just opposite of LDA. STA means what? Store accumulator. Store accumulator value in memory location. In memory location. So here we have to store the accumulator value in the memory location. In the memory location. So same way, see, same. Example will be what? STA let C032. Let's consider this same example only. STA C032. See, addressing mode will be what? Same. Again, see here we are directly providing. See here we are giving them the address, na? So addressing mode will be what? Direct addressing mode. Direct addressing mode. Number of byte will be how many? Again, it's a 3-byte instruction. See why? See, STA C032. We have written in this way. So ये 1 byte. This is 1 byte. This is 1 byte. The total become 3 byte. Okay. The same in exam again. Like for example, you have to write before and after. Before execution and after execution. So before execution, you have to draw a diagram in this way. Same which we have seen in LDA. Let A to be 10, 20, 30, 40, and let A में क्या आ जाएगा 50. After execution will what will happen? See 10, 20, 50 will come here and here, and A will be as it is. So देखिए अभी यहाँ पर 50 आ गया, और LDA में क्या होता है हमारा A का वैल्यू चेंज होता है, LDA में क्या होता है हमारा C, सॉरी देखिए LDA में क्या हो रहा था हमारा A का वैल्यू चेंज हो रहा था ना, सी हमारा A का वैल्यू चेंज हुआ, सी A is 50 here and after execution A will become 30. जो वैल्यू यहाँ पर है मेमोरी लोकेशन में हम वो वैल्यू चेंज कर रहे थे, बट इन केस ऑफ व्हाट STA means what we have to store the value in the memory location. तो हमारा A का वैल्यू एज इट इज है, लेकिन देखो हमारा मेमोरी का वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया, C0 this is 31, this is 32 and this is 033. Okay, देखिए हमने इधर क्या लिखा है STA C032, therefore this is a memory location and therefore this value get changed. This value get changed. Okay, now same we have to see
last two instruction. Now one more is what? LDA. One more is what? See, one more is what? LDA X. LDA X. What does it mean? LDA X means what? See, one more thing. See, X stands for register pair. X stands for register pair. First of all, इसका हम example लेते हैं, then it will be very easy for you to understand. See, LDAX and let it to be D. Like, see, before execution, they will give you D50 E01 and let A50. See, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ना हमें ना डायरेक्टली एड्रेस नहीं दे रहे. See, the address of location, the address of location is stored in D. The address of location is stored in D. So अपना memory location क्या हो जाएगा then? See, our memory location is what? D. D means what? 5001 is a memory location. Is a memory location. See, so in this case, we are not getting address directly. We are getting address indirectly via D. Therefore, it is called as indirect addressing mode. It is called as indirect addressing mode. तो देखो आपको एग्जाम में कैसा लिखना पड़ेगा? So you have to draw diagram in this way. तो देखो हमें ना समझना चाहिए ये जो D है, दिस इज द मेमोरी लोकेशन. अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मेमोरी लोकेशन. So after execution will what? After execution क्या होगा? After execution same. See, अगर जैसे कि हमने लिखा है LDA X D. This means what? देखिए हाँ, डी में क्या हमारा 50 एंड ई में क्या है 0. यहाँ पर हम ना डी नहीं लिखते, जस्ट सिंपली राइट डी. अगर हम डी लिखते इसका मतलब क्या? वो डी है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर एक्स लिखा है. यहाँ पर एक्स मीन्स व्हाट? रजिस्टर पेयर. एक्स मीन्स व्हाट? रजिस्टर पेयर. ओके. सो देखो ए में अपना 10 है, 20 है, 30 है एंड 40 है. तो ए में क्या आ जाएगा अपना? देखो अपना डी में क्या है? 5001. सो मेमोरी लोकेशन विल बिकम दिस ना. तो ए में क्या आ जाएगा? 20. ए में क्या आ जाएगा? 20. ठीक है. so this is what LDAX. See, only difference between LDAX and I think so this one. Just for ninth one. So the only difference between LDAX and LDA is what? The only addressing mode. So in LDA we are directly giving them the address. We are directly giving them the address. But here in LDAX we are not giving directly address. See, our address is present in the register D, and that we are providing them D. So in short, this is indirect addressing mode. This is the only difference in LDX and LDA. Okay. Now same. So see, if we see, addressing mode will be what? Addressing mode is indirect and number of bytes and number of bytes. See, number of bytes will be what? Here the number of bytes will be 1. Why? अगर आप देखोगे ना चार्ट में, like if I write this instruction, तो if you see, अगर हम चार्ट में देखेंगे ना तो हमें ये इंस्ट्रक्शन में हमें एक यूनिक हेक्स कोड मिल जाएगा. Therefore it's 1 byte instruction. लेकिन देखिए LDA is what? So if you observe, LDA is what? How many byte instruction? 3 byte instruction. See here, LDA is what? 3 byte instruction. So देखो, this is the one of the most frequent question your in Viva your teacher will ask you. What is the difference between LDA and LDAX? And same with the two difference. So first difference is what? LDA is the direct addressing mode, and the number of bytes is what? 3. And LDAX is what? Indirect addressing mode, and the number of byte is 1. The working is same.
वर्किंग दोनों सेम ही काम करते हैं, वर्किंग में डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस किसमें, खाली थोड़ा इसमें, वन इज एड्रेसिंग मोड एंड नंबर ऑफ बाइट, एंड सेम, they can ask you about what STA, they can same ask you about, see STA, now let's see STAX also, देखिए STAX सेम, इसी में ऐसा लिखता हूँ, and let's see if I write in this way and say before execution like D में 50 है and A में 02 है and मेरा A में like 58 है, तो see before execution this will be what, in this way, this is 5000, 5001, 5002, 5003, let it to be 10, 20, 30, 40 and aim अपना 50 है। See after execution क्या हो जाएगा, after execution see here, this is 500, 5001, okay, so after execution क्या होगा, so 10 will be as it is, 20 as it is, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा 58 and यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 40, सॉरी यहाँ पर 40 या 40 क्यों, so यहाँ पर 58 क्यों आया, क्योंकि see we have written XTAX D and this definition is what, we have to store the content of accumulator into memory location pointed by D E, ओके, तो जो D में क्या वैल्यू था हमारा 5002, तो सी इस अगर हम इसको देखें ना इंटरनली, सी इफ इवन दो वी हैव रिटन इन दिस वे, सी हमने इसको कैसा लिखा है XTX D, ठीक है, इंटरनल वर्किंग इज व्हाट, इंटरनल वर्किंग है तो ऐसा ही होगा ना, internally this D will replace with what, 5002 and this become, as we saw earlier, this is become STA only, okay, this is the internal working. So addressing mode is what, indirect addressing mode is what, indirect addressing mode, and addressing mode is indirect, and number of bytes, see number of bytes is what, 1, because for this instruction we will get a unique number, we get an unique number for this instruction, okay, so this is what your LDA and XTAX. देखिए now same, this is also one of the question which your teacher in your practical examination can ask, what is the difference between XTAX and STA, same again, two differences, indirect, that is direct, 1 byte instruction, that is 3 byte instruction, same, okay. Now one last instruction in data transfer instruction in group is what, exchange instruction, exchange, so this is very simple, this just exchange, so this instruction will exchange the content of HL with D, okay, means see, like let's take an example, then it is easy for you, देखिए like H में 50, C0 and L में 31 है and D में मान लो D0 है, assume कीजिए, and E में सॉरी 50, so आफ्टर क्या हो जाएगा, आफ्टर H में आ जाएगा D0, B में आ जाएगा C0, L में आ जाएगा 50 एंड E में आ जाएगा 31, जस्ट बस हो गया, दिस इज द यूज ऑफ द एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन, ओके। नाउ एड्रेसिंग मोड क्या है इसमें, एड्रेसिंग मोड, एनीवन व्हाट इज द एड्रेसिंग मोड ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, इम्प्लिसिट है। हाँ राइट, इम्प्लिसिट है। क्यों इम्प्लिसिट है, क्योंकि हमने इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है ना, दिस इज नॉट योर इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। नाउ नंबर ऑफ बाइट्स, सो नंबर ऑफ बाइट्स इज 1, व्हाई 1, क्योंकि अगर आप ये देखोगे ना आपको इसका एक हेक्स कोड मिल जाएगा आपको चार्ट में, दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ओके। सो हियर वी आर डन विद द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। आपको देखो इतना ही एग्जाम में, इतना ही आपको एग्जाम में है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। और LHLD और SHLD में हाँ से, लेकिन वो ना मोस्टली यूज नहीं करते हैं,
So these are the instruction which are quite frequently asked in your examination. And ये जो instruction हमने पढ़ा है ना, ये आपको like जब हम code लिखेंगे ना, जब when we do programming, then ये आपको use होने वाला है. Then the remaining, I think so, remaining one two may be there. One is HLD and SSLD. Those two are quite easy. You can, अगर आप एक बार खुद read कीजिए, अगर आपको नहीं समझेगा तो then I will explain you. But these are the some important instruction. देखिए move जो है वो हमें आना ही आना चाहिए, समझना ही चाहिए सभी. Then only we are able to write the code in the examiner. जब भी सभी हमें code समझेगा. Okay? So let's Yes. do one thing. अच्छा, किसी को डाउट है अभी तक हमने जो पढ़ा है? लेट मी नो अगर अभी आपको डाउट है इतना, किसी भी कुछ डाउट है इसमें. लेट्स डू वन थिंग, जस्ट टेक अ 5 minute ब्रेक. आप क्या कीजिए, सी जस्ट गाइस, एक बार ना यू गो थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शंस एटलीस्ट वंस ऑफ डेटा ट्रांसफर ग्रुप एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स. let's take a not a 5 minute break, let's take 2 minute break at least. आप 2 मिनट में क्या कीजिए, एटलीस्ट सभी इंस्ट्रक्शन से एक बार गो थ्रू कीजिए एंड मुझे बताइए अगर आपको कुछ कोई भी इंस्ट्रक्शन में कुछ डाउट है क्या. ओके ओके फाइन. सो इन एंड आउट तेजस ने पूछा है, व्हाट इज इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन इन डायरेक्ट एड्रेसिंग. सी आई थिंक सो तेजस, इन एंड आउट इज मोस्टली यूज्ड फॉर your peripheral devices. See, जब ये हम कब यूज करते हैं, when you have to transfer data from your memory to input and output device. Sorry.
इन हम कब यूज करते हैं? When you have to transfer data from your output device into memory location. And out is what when you have to transfer your data from memory location to your output device. Then we use in and out. So mostly in and out is used for data transfer from memory to the peripheral device. In and out instruction. I think so आपको ये इसमें है नहीं ना? Like in your यस सर टेक्स्ट बुक में दिया है. textbook में दिया है? यस. कहाँ पर? Like in data transfer group or in which group? डेटा ट्रांसफर में. Okay, like okay. I think so मेरे इसमें दिखा नहीं है. So let's Google it out. Google कर देता हूँ. सर ये पोर्शन में नहीं है, ये मतलब ये आरडी सुपेकर के टेक्स्ट बुक में दिया है. कौन सा बुक में दिया है? आरडी सुपेकर. ये पोर्शन में मिस ने बताया नहीं है दो इंस्ट्रक्शन. तो ये पोर्शन में नहीं है, आई थिंक सो, राइट ना? पोर्शन. लेकिन ये मोस्टली दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइस टू मेमोरी लोकेशन, मेमोरी टू पेरिफेरल डिवाइस, राइट? वही लिखा है ना तेजस? आई थिंक सो. यस सर. ओके, राइट. सो आई होप सभी को समझा. किसी को कुछ डाउट है तो लेट मी नो, और वी कैन सर मतलब इधर ऐसे लिखा है कि जो माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डेटा सेंड करता है लोअर एड्रेस बस A0 to A7, इट आल्सो डुप्लीकेट्स दिस एड्रेस ऑन हायर एड्रेस बस A8 to A15. नहीं, आप टाइप करोगे जैसे आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. आप चैट में टाइप कर दोगे एक बार आपने जो कहा अभी मुझे? अच्छा, if anyone want this notes, so this is my email ID. Or else you can just send me hi on WhatsApp number. I will just share with you. Okay, so this means what? Tejas, इसका मतलब क्या होता है कि ना why when this institution is executed the microprocessor send 8-bit address on lower address bus 0. हाँ, okay, fine. Or you can WhatsApp me. I will just share this data with you. हाँ, राइट. देखिए मैं आपको जस्ट इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ तेजस. देखिए कैसा होता है कि ना तेजस, इन 8085 what happened in 8085 now the address bus is of 16 bit, the data bus is of 8 bit. This is for the memory location, this is for the memory location, but for the peripheral device, see, we have, like, we want address of only 8 bit, we want address of only 8 bit, and data is also of 8 bit, we can transfer. लेकिन देखो कैसा है, हमारे पास जो बस है ना, बस सिर्फ बस मीन्स व्हाट यू नो, बस मतलब क्या, लाइंस. अगर आपने वो देखा रहेगा ना माइक्रो प्रोसेसर, और या लाइक इफ यू ऑब्जर्व, बस इन द सेंस क्या होता है, लाइंस होता है. अगर आपने कभी नोटिस किया रहेगा मदरबोर्ड में देखो ऐसा गोल्डन लाइन रहते हैं, दोस आर बस ओनली. ठीक है, जिस मदरबोर्ड जो कैसा है, अपने पास ना 16 बिट का बस है. अपने पास कितना बिट का बस है? 16 बिट का. ठीक है, बट आर इन पेरिफेरल डिवाइस, इन केस ऑफ पेरिफेरल डिवाइस, जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे समझे, जैसे कि मान लो अभी एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में मान लो अज्यूम करो 999, अज्यूम करो 1000 रूम है. तो जो रूम्स फर्स्ट फ्लोर में रहेंगे हम कैसा लिखते हैं ग्राउंड फ्लोर में? सी हम जैसे कि मान लो फर्स्ट रूम है तो हम कैसा, हम ऐसा नहीं लिखते ना रूम नंबर, हम कैसे लिखेंगे इसको? सी वी विल राइट इन दिस वे, ऑल्दो दिस मींस वन ओनली, और ये भी वन ही होता है, लेकिन हम लिखते कैसा है?
ये why we write in this way, because we have to maintain the 3 digits, we have to maintain the 3 digits. So same, see अपने पास बस कितना बिट का है, 16 बिट का है, अपने पास बस कितने बिट का है, 16 बिट का है, ओके। लेकिन पेरिफेरल डिवाइस में बस कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है, ओके। सो हम क्या करते, हम ये जो 8 बिट है हम लोअर एड्रेस में डाल देते, सी तो हम क्या करते, दिस 8 बिट, दिस इज 16 बिट ना, 16 बिट मींस व्हाट, दिस वन। तो देखो यहाँ पर एड्रेस हम कॉपी कर देते हैं इसका, पेरिफेरल डिवाइस का, okay, this peripheral device we copy address here. Now this is blank now, this is blank. Either you can place 0000 or else you can just duplicate it, you can just duplicate it, और आप 00 भी place करते हैं, okay। So this is the what they have written, तेजस समझा आपको तेजस? Yes sir. Okay, और किसी को कुछ डाउट है, or else we can move ahead. Fine, let's move ahead. Make new element. सर STX और LDX में HL रजिस्टर पेयर नहीं आ सकता ना? किसमें किसमें? STAX और LDAX। STX और नहीं, देखो वहां पर कुछ भी आ पाएगा, नहीं तेजस वहां पर ना कुछ भी आ पाएगा। सी रजिस्टर पेयर, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सी वी हैव ओनली 8 रजिस्टर्स, सी हियर वी हैव ओनली 8 रजिस्टर्स, लेट्स, so this is what register and this is what register pair. सी रजिस्टर पेयर में क्या क्या होता है, A B C D, see this is registers H and L, this all are of 8 bit, how many bit, 8 bit, and अपना रजिस्टर पेयर कितना होता है, 16 बिट का। से मैंने आपको उसी दिन ही बताया था, से वी कैन मेक अ पेयर ऑफ व्हाट, BC DE and HL, so out of this 3 pairs, so we have 3 pair, out of this 3 pair anyone can come, Tejas? Yes sir. BC DE and HL, देखो ये आपका एक MCQ क्वेश्चन है, they will give you which is the, which one is not the valid register pair, and they will give you in this way HD। तो इसमें वैलिड क्या, ये नहीं है, देखो हम हमारे पास 3 ही पेयर है, याद रखना, BC D HL, वी कैन नॉट मेक अ पेयर ऑफ CD, दिस इज रॉन्ग, वी कैन नॉट मेक अ पेयर ऑफ EH, दिस इज आल्सो रॉन्ग। So either they will ask you in exam in this way, CDE, which is valid or which is invalid. So this is one of the MCQ question in your examination. Yes sir, समझा। Okay. So this is result. Okay, so we are see, अभी हम देखते हैं अरिथमेटिक ग्रुप। सी एडिशन, सी इसका मतलब क्या, मैट्रिक मीन्स वन, either addition, see addition means normal addition or increment, or increment by one, increment by one। Second is what, फ्रैक्शन, मतलब क्या होता है अपना, सिंपल माइनस, और हम कहते हैं डिक्रीमेंट बाय वन। देखो अगर आपने फॉर लूप यूज किया रहेगा, फॉर लूप तो हम क्या करते हैं उसमें, हम इंक्रीमेंट बाय वन करते हैं ना, हम ऐसा लिखते हैं ना, फॉर I equal to 1, I less than equal to n, I plus plus, so this is what increment, हम क्या करते हैं, I को 1 से increment करते हैं ना, this is what something which is called as increment by 1 ना, and decrement हम क्या करते हैं, or else we can write the same code in this way also ना,
This is what decrement by 1. Okay, and or else you see -1 means what? -1 means what? You can say we used to write in this also, na? I equal to I minus 2. Okay. Also, first one is what? Achha, one more point. So one more point just to make a note. Just wait for a second. Sorry everyone. अच्छा start. Okay, हम काम पर थे. हाँ देखिए. For the arithmetic instruction now, for this, see the rule is what? There's a rule which you have to keep in your mind. See, for addition we require 2 number, for subtraction we require 2 number. Okay, so out of this 2 number, see, one number must be in accumulator, one number must be in accumulator. This is very important. Okay, एक नंबर आपका कहाँ रहना चाहिए? आपका एक नंबर एक्यूमुलेटर में रहना ही चाहिए. One number must be in accumulator, and second number can be anywhere. Anywhere means what? Anywhere means either in register or in memory. But एक नंबर कहाँ रहना चाहिए? आपका accumulator में. This is the rule. This is the most fundamental rule. Okay. Now let's start addition instruction. Okay, addition में ना different types से. Let's first learn the simple addition. Simple addition हम क्या देखते हैं? Simple addition. Okay. Let's divide this one. See. Let's add addition with memory. Addition with memory. This is stands for memory. Okay. So this means what? This means what? So this means what? A equal to A plus M. This is what? A equal to A plus M. Okay. See, addressing mode will be what? Addressing mode. See, addressing mode will be what? Indirect. Will be
इनडायरेक्ट। तो देखो एक शॉर्टकट, एक नोट याद रखो, अगर m रहेगा ना m, if you return m, then the addressing mode will be what? Indirect. नोट में हम क्या लिख पाएंगे? नोट में if m, then addressing mode will be indirect. Okay. See, indirect addressing mode. Now number of bytes will be what? 1. लेकिन देखो आपको ये पूरे इंस्ट्रक्शन के लिए ना एक हेक्स कोड चार्ट में मिल जाएगा. Okay. Now before and after execution, same thing we have to do. Before and after execution, before execution and after execution. हाँ लेकिन देखो आई होप सभी को फ्लैग रजिस्टर याद है. फ्लैग रजिस्टर जो हमने कल देखा था, आई होप सभी को याद है फ्लैग रजिस्टर्स. Yes, sir. Okay, so yeah, before execution. So before execution, you have to take two number. Let assume अपना A में है 05. अपना A में क्या है? 05H. And अपना D में assume करो कि let number be 35H. Let number be 35H. Okay. So after execution क्या होगा? After execution. One more thing. Let your HL be. Let आपका H में C0 है और अपना L में C1 है. And they will give you something in this way. You have to draw all this thing. See, after execution will be after. Now we have to do after execution. What we are doing, A equal to A plus M. तो अपना A क्या है? See, A is what? 05. हम 05 को कैसा लिखेंगे? मैंने आपको बताया था ना. See, for 0 it will be 0 0 0 0. मैंने देखो आपको एक चार्ट लिख के दिया था, आपको याद है? And for 5 this will be 0 1. Okay. And now what is M? देखो M मतलब क्या होता है? M means what? HL pointed by HL. HL में क्या है अपना? In HL we have C031. C031. So M will point where? See, M will point here. So M में कितना अपना 35. So this is our M ना. So our M is what? 35. So our M is 35. So for 3 it is what? 0011. And for 5 it is what? 0101. जब हम लिखेंगे, now we have to do addition. So A and M. See, A is 0 0 0 0 0 1 0 1. This is 0 0 1 1. This is 0 1 0 1. See, 1 plus 1 is 0. Carry 1. This will 1. See, 1 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1, and this 1 plus 0 is again 1. See, 1 plus 1 is 0. Carry 1. So 1. I hope this is clear to everyone. So now this result will store in where? This result will be stored in your accumulator. Where this result will store in the accumulator. Now see, you have to again break. This is code for 3 and this is code for A. So in your accumulator, the content is what? 3A. Now you have to draw the flag register also. So you have to draw the flag registers. This is a sign flag. This is your 0 flag.
This is your carry flag. This is your auxiliary carry, and this is your parity flag. Okay. देखो अपना carry generate नहीं हुआ है ना. See, our carry is not generated, so this is what 0. Now parity, see there are the even number of ones. Now, so parity will be what 1. Auxiliary carry means what? Auxiliary carry matlab if from year to year means from year to year means from D3 to D4 carry generate. If carry generate, then auxiliary carry will be 1. देखो अपना यहाँ से वहाँ carry generate हुआ है क्या? नहीं हुआ ना. See from year to year means see from year to year अपना carry generate तो हुआ नहीं. So auxiliary carry will be what? Will be 0. The answer is not 0 na. 0 flag will be what? 0. And the answer is positive. Sign flag will be what? 0. And see, and the remaining thing we have to place the 0 0, or you can just put the dash mark also, not an issue. You can place just dash. Okay. So see, you have to in exam if this instruction come, then you have to explain in this way. And at last, you have to draw. So at last, you have to write again. See in this way. सभी को समझा ये चीज? इसमें कुछ डाउट है इसमें? Anyone have any doubts? इसमें कुछ डाउट है इसमें? Please let me know. आई थिंक सो खाली तेजस ही लेक्चर अटेंड कर रहा है, बाकी सब कोई लेक्चर अटेंड कर रहा है कि यार किसको इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा मतलब लास्ट में रटना ही है तो अब से क्यों बढ़े, ऐसा कुछ सीन है? नो. देखो एट लास्ट अगर आप रटोगे भी ना तो भी आप ये सब नहीं सॉल्व कर पाओगे यार. आपको देखो एग्जाम में आपको कोड, आप कोड याद कर लोगे, करने बैठोगे तो भी, बट देयर आर अराउंड 12 to 15 कोड. ये प्रैक्टिकल में मे बी और टीचर विल टोल्ड यू यू हैव टू लर्न दिस 3 कोड. आप वो 3 कोड मस्त याद करके चले जाओगे, बट इन फाइनल एग्जाम देयर इज नथिंग ना, लाइक अगर आप ये कोड याद करके आओगे तो आपको ये कोड ही आने वाला है, ऐसा तो कुछ है नहीं. लास्ट 10 मार्क विल बी फॉर दिस कोड ओनली. सी अगर आप सेकंड चैप्टर जो हम अभी पढ़ रहे 8085 इंस्ट्रक्शन सेट, अगर आप ये नहीं करोगे तो यू वोंट एबल टू स्कोर मोर देन 30 आप स्कोर नहीं कर पाओगे. your score will be between 25 to 30 only in the final examination, क्योंकि ये चैप्टर ही 20 मार्क का आता है. 10 मार्क का खाली क्वेश्चंस लास्ट के आएंगे, and apart from this the 5 mark question will become like this way. This is a 5 mark question where they will give you the 4 to 5 instructions, and they will give you some data where you have to perform the operation on the data, and the final answer you have to write. So that will be a 5 mark question, and more 5 mark question will be what? The explanation of the instructions. So in paper, in and around 25 up to 20 mark, this chapters only come, the second chapter. अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो बाकी फिर then the remaining is what? Networking. Then the remaining is what? Networking, and the remaining this 8085 some theory concept that you can easily do. वो हम एक बार याद कर पाएंगे, लेकिन ये चीज हम याद नहीं कर पाएंगे. So मैं अभी भी कह रहा हूँ, if anyone have any doubt, let me know, ताकि ये अच्छे से तुम करो. Also, at least second chapter. Okay, fine. So we have done with add. So same, we have done with add instruction, add and the same way what we have to do with addition.
Same way we have to do with addition with registers. Addition with register. So same. Again, this is the now. See, addressing mode will be what? Addressing mode will be register addressing mode. Register addressing mode. See, example is what? Like add B. Add B. So this means what? A equal to A plus B. A equal to A plus B. This is the example. This is addressing mode example, and the byte is again 1 byte. Byte is again 1 byte. Why 1 byte? See, like even if you if you search in a chart, you'll definitely get one unique number for this instruction. So any instruction, like even though if I write add C, add B, okay, and even if I write add E, then also you will get a one unique number for all these instructions. Therefore, it's a 1 byte instruction. Then see here. Okay, now example. How you have to write the example? See, again, you have to follow the same procedure. That in A, it's to be 05, and like in B, it's to be 35H. 35H. So after execution, how we have to write? Same, we have to follow all those things which we have done here. So whatsoever we have done, all those things we have to again follow here. Right? आपको ये सब वापस लिखना है. And before after execution, same. A is 05, then you have to break this number into 0000, and 5 is what? 0101. And say M is what? 0011, and 5 is what? 0101. You have to break this number in this way. You have to add up all this number, and then your A equal to is what? 3A. It's the same way you have to do here also. Means here also you have to give the same example. Okay, so I'm leaving this blank space. You fill it. Okay. Now we have done with normal addition. Now one more addition is what? Addition with carry, or it's to addition immediate value. Addition immediate value. Same here also. See, addition immediate value means what? See, जैसे कि हमने देखा था ना, देखो जैसा कि हमने देखा था in case of addition, in case of move instruction, जैसे कि हमने देखा था in case of move instruction, let's see, in case of move instruction हमने क्या देखा था? देखिए यहाँ पर, see here we have used MVI ना. See, in case of if we use MVI, then we are directly moving data. ठीक है, इसलिए हम देखो हम मूव में क्या करते हैं? हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, लेकिन एमवीआई में हम डायरेक्टली डेटा मूव करते हैं. तो सिमिलरली इसमें क्या होता है? ये सर सेम इसमें क्या होता है? एडिशन देखिए इसमें क्या होता है? वी आर एडिंग डेटा. what we are doing, we are adding accumulator with data. The data is stored in either in memory or in register. But with the help of this instruction, we can directly add data with the accumulator. So this means, so this is what? This is A equal to A plus data. Like example, if you write, then this is like a DI, let it to be 35H. Let 35H. So this is what? This means A equal to A plus 35. A equal to A plus 35. A equal to A plus 35. This means, okay. Now see, addressing mode will be what? See, addressing mode क्या आएगा? Immediate addressing mode. Why immediate addressing mode? Because we are directly providing the data. Instead of providing the address, here we are directly providing the data. So register mode will be what? Sorry, addressing mode will be what? Immediate. Will be immediate. Now number of bytes. So number of bytes. Number of bytes will be what? 2 bytes. How many bytes? 2 bytes. Why 2 bytes? See, ADI, and we have written data 35H. So see, for this we will get a unique number.
and this is 2 number now, so 1 byte. So 1 plus 1 is what? 2 byte. So this is 2 byte instruction. And same again, you have to write all those things which you have written earlier, before and after execution. Before and after execution, before execution and after execution. So let's assume A में अपना 05H and हम data add कर रहे हैं. Our data is what? 35H. So after execution again you have to do A is what? 05. So 05 means what? 00000101. Data is what? 35. Again 00011010. The same which we have done here. देखो अगर आप एक एग्जांपल याद मतलब अगर आप एक एग्जांपल समझ जाओगे ना then you can do easily, then you can write the same example in all the instructions. Same example, no need to write the new example. Okay, same. Then again you have to do addition. A equal to A plus data, then your flag register will be set, then your flag registers will be, see, then you after doing the additions you have to set your flag register. This is what, this is your flag registers now. This is your flag register. This flag register depend upon your final answer, how you get the final answer. Okay, so this flag register will be set. So in every example of arithmetic group you have to do all those things. First you have to explain, then you have to write before, and then you have to write after. Okay, now same. So this is what ADI data. This is what ADI data. Now one more version of addition is what? One more version of addition is what? Addition along with carry. Addition along with carry. Addition along with carry. Okay, addition along with carry. See, we have shown normal addition, then addition immediate, and now addition along with carry. See here, the only difference is what? The only difference is here the only difference is here A equal to A plus M plus C. Okay, and if we write in this way, the C stands for carry. Where your C stands for your carry. See, if we see this definition, definition, this is what add. This is what your add B. So add B means what? A equal to A plus B. But if we see this definition, this is what ADC. This is what ADCB. Okay, this is ADCB. This is what A equal to A plus B plus carry also. So you have to add carry also. You have to add carry. Okay. Now same. Everything will be same. सब कुछ same लिखना. देखो ये same. Now what is the addressing mode? Addressing mode will be indirect. Number of byte will be indirect. Number of byte will be 1. Okay, number of byte will be 1. An example, before execution and after execution. So you have to explain all this instruction in same way. This is also same. Nothing. You see, example will be all same. The only thing varies is what you have to add. Now in this scenario you have to add a carry also. You have to add carry also. Let's take an example how to add carry. एक example देख लेते हैं हम, ठीक है? Let's take an example. Here. Let's take an example. Same. Let's take A में अपना assume कीजिए कितना A में 48 है, and let let's do this one, and let in B we have 50, or let's consider 30, and we have 30, and in carry we have 0 only, 0 0. Same. You see what you have to do? First you have to do A equal to A है ना, first 40 को तुम्हें break करना पड़ेगा. So 4 means what? 1 0 1 0 and 8. I hope सभी को table याद है, or else I should write one more time.
देखो ये table, this is the important table which you have to keep in your mind. So this is what 0 0 0 0. So this is the important table. आपको ये याद रहना ही चाहिए table. ठीक है? So this is the important table which you all have to keep in mind. ठीक है? ये आपको table याद रहना ही चाहिए. Now let's come here. आपको अगर note करना है, you can make a note of it also. Everyone just please make a note of it. Okay. ठीक है. So हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं. So let's come to our example only. See, now 8 is what? Then you have to do a equal to a plus b. And now b is what? 30 now. So b is 0 0 1 1 and 0 0 0 0 0. Now you have to add up. I hope सभी को addition तो आता हो. Yes, sir. Now see, this become 8 and this become 7. Now see, अपने को a में क्या आ गया? 78. Now don't see, अपने को carry भी add करना है. Now carry is 0. Since carry is 0, so just wait. Everyone just wait for a moment. अच्छा मेरा सिस्टम यार हैंग हो गया. जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. मैं जस्ट रिस्टार्ट कर रहा हूँ. ओके. And then restarting this system.
Everyone just wait for a moment, okay? Let's do one thing. Let's stop today. The system is not working at all. Okay, let's stop for today. We will continue tomorrow. Okay. Yes, sir. Okay. Fine. Fine.